So who wants to grow his business valuations 2x, 5x, 10x, or even more? Come on, write down in the chat box. Who wants to grow his business valuation 2x, 5x, 10x, or even more? 100x. That's good. That's good. That's the spirit. More. More. Yes, I am. Yes, we want 100x. More answers, please. Come on, fast. Come on, 10x, 100x, 100x, 1000x, 100x. More. Good, good, good. Thank you. Thank you. Awesome. Awesome. All of you want to grow your business valuations beyond expectations, maybe 5x, 10x, 20x, 100x, 1000x. But what is stopping you? कुछ तो है ना? कुछ तो है जो आपको रोकता है. What is stopping you? Shortage of funds is the main culprit. जब पैसे का शॉर्टेज होता है ना, तो बिजनेस ग्रो नहीं करता है. As simple as that. Okay. No funds, no growth. Short funds, short growth. What is the solution? जब फंड्स नहीं है, शॉर्टेज है, what is the solution? SME IPO. And I'll show you in a short while why SME IPO is the best option. Okay. Now, let me tell you, this webinar is going to last for around 90 minutes. We are going to use a mixture of Hindi and English. This webinar is for growth-hungry MSME or say SME entrepreneurs who want to take their business to the next level through an SME IPO. We are not going to discuss unnecessary things, no fluff, only real and actionable stuff we are going to talk about. Okay. If you have got any questions, I'll request you to please keep your questions noted down with you, so that in the end, when we have the question answer session, you can ask all your questions. I'll try to reply each and every one. Okay. If you ask your questions in between, I will not be answering. And if I start answering the questions in between, that will interrupt the flow of the webinar and everybody else will be distracted. Okay. So please keep the questions for the question answer session. Now, what we are going to talk about in this webinar, इसमें आपके लिए क्या है? First of all, we are going to talk why SME IPO. SME IPO करने की जरूरत क्या है भाई? हमारा बिजनेस चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, we are making profits, blah blah blah. क्या जरूरत है SME IPO करने की? We are going to talk about the steps involved. क्या क्या करना पड़ता है, क्या steps involved हैं. Then we are going to talk about strategies to be used in SME IPO. I will also be showing you some case studies of the companies which came out with SME IPOs in the recent past. We'll be talking about eligibility norms, कौन-कौन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, या करने के लिए आपको किस लेवल तक आना पड़ेगा, and how we can help you in the process. That is the most important thing, because this is a very tricky and very critical process, and you may not be able to complete the process without professional help. Okay. Now, during last few years, we have been hearing a lot of hue and cry, MSME, 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 MSME. And they say, MSME is the growth engine of New India. MSME is the growth engine of New India, and that is true to some extent. Why I say so? Because there are more than 6.33 crore MSMEs registered with the government of India. 6.33 crore registered. And there are many more which are not yet registered with the government. Okay. So you can imagine MSMEs contribute more than 27% of India's GDP. That is quite a substantial share. Okay. As MSME sector is the largest employment provider in India. जितना employment MSMEs provide करते हैं, कोई और sector उतना नहीं करता. Okay. But अभी क्या सिनेरियो क्या चल रहा है भाई? MSMEs की अगर हम बात करें, क्या सिनेरियो चल रहा है? There was a survey conducted by the Consortium of Indian Associations, and they found that 72% of MSMEs are either stagnant or into losses since past 5 years. I'm not saying that. This is the finding of the survey conducted by Consortium of Indian Associations. Okay. Why? क्या कारण? Again, shortage of funds.
फंड्स की शॉर्टेज है, बिजनेस बढ़ता नहीं है, तो या तो स्टैग्नेंट है या लॉसेस में है. आर यू वन ऑफ देम? क्या आप भी उनमें से एक हैं? Most probably because you are attending this webinar, and most of the MSME entrepreneurs are always short of funds. Now we are going to talk about SMEs only, not MSMEs. Okay? Because micro industries are not eligible for IPO. And once you become eligible, you are out of the micro sector. Okay? तो तकलीफें क्या क्या होती हैं? What are the pain points of SMEs? Slow growth hota hai because shortage of funds is there, so growth is slow. You don't get any valuations. Nobody recognizes you. Recognition nahi milta hai. There is no wealth creation. You may differ from me here. You may say we are creating profits. So my dear friends, you are creating profits. Profit बना रहे हैं आप. Wealth create नहीं कर रहे हैं. Wealth creation कैसे होता है? I'll be showing you in a short while. Okay. Then heavy debt burden. Mostly SMEs के ऊपर बहुत सारा लोन होता है, and that becomes a big burden, right? Then there are no systems and controls in place, and since there are no systems and controls in place, so there is no credibility. तो ये सारी मेजर प्रॉब्लम्स हैं. देयर आर अदर प्रॉब्लम्स आल्सो. सो इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि व्हाट इज योर बिगेस्ट चैलेंज एज एन एसएमई एंटरप्रेन्योर? व्हाट इज योर बिगेस्ट चैलेंज? आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है एज एसएमई प्रमोटर? Please write down in the chat box. What is your biggest challenge, biggest problem? Come on, fast. Please write down fast in the chat box. What is your biggest problem? Shortage of funds for growth, getting investments, fund only problem, fund shortage, blah, 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 fund shortage. कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा आईपीओ के लिए? आई स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस. आई आस्क यू नॉट टू आस्क क्वेश्चंस इन बिटवीन. स्टॉक एक्सचेंज, stock shortage in textile, fund shortage. So the crux is most of the answers indicate that there's a shortage of funds, or shortage of funds is the biggest problem being faced by SME entrepreneurs. Okay. Shortage of funds is the biggest problem, and when there is a shortage of funds, it's like driving your car on an empty fuel tank. आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी पेट्रोल की टंकी में पेट्रोल पूरा नहीं है, थोड़ा सा पेट्रोल. What's going to happen if you are driving on an empty tank? This is going to happen. Either you will be pushing your car or somebody else will be pushing your car. पेट्रोल पंप तक को ले जाना पड़ेगा ना धक्का मार के. Similarly, in the business, if there is a shortage of funds, forget about growth. Even running day-to-day operations becomes difficult because you need funds, you need finance at every step, every stage of your business, right? So fundraising options, when you need funds, what are the options available to you? First of all, you go or you opt for loans or help from friends and family. This is the first option which comes to your mind. But my dear friends, when you get financial assistance from friends or family, to hota kya hai? There are relationship issues. At some point of time, if you are not able to repay on time, if you are not able to pay interest on time, etc., then relationship issues आ जाते हैं, आपके रिश्ते खराब होते हैं. Second option is business loan from banks or institutions. Loans may be against collateral security or without collateral security, but all loans carry an element of interest. ब्याज तो देना पड़ता है. Okay. And normally the interest rates keeps on rising. Sometimes they fall, but most of the time they keep on increasing and increasing and increasing. So this becomes a big burden. And in a way, you are working for the bank. एक तरह से आप अपने बैंक के बंधुआ मजदूर बन जाते हैं. Why I say so? Suppose you have got bank limits or loans of around 10 crores. In 1 year, you make a profit of say 2 crores.
How much interest you are going to pay on a 10 crore loan? More than 1 crore. So what remains with you after paying the interest to bank is less than half of what you are earning. So you are working for the bank, not for yourself. Okay. The last option is equity. Equity capital. You can raise equity capital from private equity providers or from capital market. Private equity investors normally don't entertain SMEs. And even if they entertain, their term sheets, the terms and conditions are very difficult for SMEs to follow. Then they focus on growth of the top line, not the bottom line. आपको प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है इससे उनको मतलब नहीं है. दे आर कंसर्न कि आप टर्नओवर बढ़ाइए, चाहे आपको लॉस हो रहा है चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है. फर्दरमोर दे डिप्यूट वन और टू पीपल इन योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो आपकी जो इंडिपेंडेंस है बिजनेस करने की, दैट इज लॉस्ट. फॉर एवरी मेजर डिसीजन यू हैव टू हैव देयर परमिशन. अगर उनकी ओके नहीं होगी तो आप कोई डिसीजन ले नहीं सकते. ओके. लास्ट ऑप्शन इज कैपिटल मार्केट्स, दैट मींस आईपीओ. ओके. सो व्हेन इट कम्स टू आईपीओ, what happens? What is the solution? The solution is IPO, that is initial public offering. When any company offers its shares to the public for the first time, this event is known as initial public offering or IPO. Okay. Now, there is a belief prevailing in the business community that IPOs are for large companies only. ऐसा समझा जाता है कि सिर्फ बड़ी कंपनियां ही आईपीओ कर सकती हैं. बट माय डियर फ्रेंड, दिस इज ए मिथ. ये एक गलत धारणा है. ऐसी धारणा है तो आपके मन में निकाल दीजिए. क्यों? क्योंकि एसएमईज को भी आईपीओ करने का हक अब है. एसएमईज भी आईपीओ अपना कर सकते हैं. बट एसएमईज के अपने कंसर्न थे. पहले एसएमईज अपने आईपीओ नहीं ला पाते थे क्योंकि उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था. Why I say so? कि बड़ी कंपनियों की भीड़ में ये छोटे छोटे आईपीओ पॉसिबल ही नहीं थे, खो जाते थे कहीं. 100-150 करोड़ से कम के आईपीओ नहीं आते थे. अगर किसी को 10, 5, 15 करोड़ की जरूरत है तो वो क्या करेगा? 100 करोड़ की जरूरत नहीं है उसको, 10-5 करोड़ का आईपीओ ला नहीं सकता. व्हाट ही इज गोइंग टू डू? नथिंग. लोन लो, कुछ करो. नो कैपिटल मार्केट. ओके. देन देयर वाज अ बर्डन ऑफ कंप्लायंसेस. मेन बोर्ड में जो बड़े आईपीओ आते हैं उसमें कंप्लायंसेस इतनी सारी होती हैं कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एसएमईज टू कंप्लाई विद ऑल दोस कंप्लायंसेस. वेरी कॉस्टली, वेरी टाइम टेकिंग. यू नीड अ लॉट ऑफ स्टाफ फॉर दैट. ओके. तो ये चीजों को देखते हुए इन 2012 बीएससी ने और एनएससी ने दे स्टार्टेड एसएमई सेगमेंट फॉर कंपनीज लाइक योर्स. आपके जैसी कंपनियों के लिए ये सेगमेंट स्टार्ट किया गया. बीएससी ने भी किया और एनएससी ने भी किया, और तब से ये चल रहा है एंड गेनिंग मोमेंटम. राइट नाउ even SMEs are coming out with IPOs, not only to raise funds but to unlock value and wealth creation also. Right? But you may be thinking we are not big enough. हम तो बहुत बड़े नहीं हैं, हम तो छोटा बिजनेस चलाते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं? So my dear friends, now even small can dream big. आप छोटे हैं कोई बात नहीं, बड़े सपने तो आप भी देख सकते हैं. आज नहीं तो कल you will become eligible for that. Okay, आप भी कर पाएंगे आईपीओ. So let me put a question. Suppose you are the owner of a business or a company. The net worth of your company is 10 crores and you are the 100% owners of the company. Okay. 100% शेयर्स आपके पास हैं, आपकी कंपनी का नेटवर्थ है 10 करोड़. फिर कोई मिलता है आपको, आप डिसाइड करते हैं मुझे अपनी कंपनी को लिस्ट करवाना है, लिस्टेड कंपनी बनाना है. तो आप लिस्टेड कंपनी बनाते हैं, आपको 25% मिनिमम पब्लिक को देना होता है, तो आपके पास बचता है 75%. बट आईपीओ में आपकी कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो मान लीजिए लगता है 100 करोड़. तो विच इज अ बेटर ऑप्शन?
10 करोड़ नेटवर्थ कंपनी का 100% मालिक होना या 100 करोड़ वैल्यूएशन की कंपनी का 75% मालिक होना, विच इज अ बेटर ऑप्शन, ए और बी? प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स फास्ट. Come on, fast, fast. B, obviously, B is the preferred option. Why? Because 75% है तो क्या हुआ, वैल्यूएशन तो 100 करोड़ है ना, तो 10 करोड़ 75 करोड़, lots of difference. Okay. Now, most people think that IPOs are about fundraising. IPOs are not about fundraising only. Fundraising is just one part of the puzzle. Why I say so? Because when you go for the IPO, you unlock the value of your business. It's about unlocking the value. How? Because you have been working in your business since years and years. बरसों से आप मेहनत कर रहे हैं. Maybe from decades. You have been putting in hard work, और उस हार्ड वर्क की वजह से आप अपने बिजनेस को इस लेवल पे लेके आए. बट यू डोंट नो द रियल वैल्यूएशन and you can't see the real valuation of your business unless and until you go for an IPO. Okay. Then IPOs are about wealth creation. How? How wealth is created through SME IPO or IPOs? Let me show you. Wealth creation for SMEs through IPO route. Let's have a glance at this table. These are the companies who came out with the IPOs in 2022. 2022 में ये टॉप 10 कंपनीज हैं जिनके IPOs आए थे. This first company, इंसोलेशन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, अक्टूबर 22 में IPO आया 38 रुपीज की प्राइस पे. अभी शेयर प्राइस है 697. कितना ग्रोथ हुआ? 1700+%. 1700+. कितना? इतना बिजनेस में इसके प्रॉफिट तो नहीं बढ़ गया ना. वैल्यूएशन कैसे बढ़ गया? बिकॉज the share was reasonably priced and the people wanted to hold the share. They kept on purchasing the share and the price went up. So जो पब्लिक के पास था उसका भी वैल्यू बढ़ा, जो प्रमोटर्स के पास था उसका भी वैल्यू बढ़ा. Okay, so the valuation increased by 1734%. The second company, 30 rupees share becomes 423, 1300% growth, 1250% growth, 1200% growth, and like that. This is how wealth is created. This is how wealth is created, right? Now, let me ask you a question. How many large companies are there in India? When I say large companies, that means companies with turnover of more than 250 crores. 250 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वाली कितनी कंपनियां इंडिया में हैं? आई वांट योर आंसर्स. 250 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वाली कितनी कंपनीज इंडिया में हैं? हाउ मेनी कंपनीज विद टर्नओवर ऑफ मोर देन 250 करोड़? मेक योर गेसेस. आई एम नॉट टेस्टिंग योर नॉलेज. मेक योर गेसेस. This is just to make it a bit interactive. Come on, 500, 5,000. Come on, fast, fast, fast. 400 plus. More answers. तुक्का मारिए. 1 lakh, 10,000. More answers. More answers, please. 10,000 above. 1 crore. 100 plus. 900. 1,000. 100. Okay, okay. 6,000. Thank you. Awesome. Well, the answer is almost 20,000 companies with turnover of more than 250 crores are there in India. 20,000 companies. And how many of these are listed? In 20,000 में से कितनी companies listed है? In 20,000 में से कितनी companies listed हैं? Please write down in the chat box. How many of them are listed? कितने listed हैं? Make your guesses. 1,000, 1,000. More answers. 5,000, 4,000, 800, all. 15,000, 5,000.
Okay, thank you, thank you. Well, the answer is 5,500 companies. Approximately, because the number keeps on changing. So, but this is approximately 5,500, which is more than 27% of the large companies. More than 27%. Okay. And you should be proud that India is the country with largest number of listed companies. दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां पे इतनी ज्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं. इंडिया में सबसे ज्यादा है. ओके. नाउ हाउ मेनी एसएमईज आर देयर इन इंडिया? व्हेन आई से एसएमईज, दैट मींस कंपनीज और बिजनेसेस विद टर्नओवर बिटवीन 5 करोड़ एंड 250 करोड़. 5 करोड़ से 250 करोड़ के बीच में कितने बिजनेसेस या कंपनीज हैं इंडिया में? मेक योर गेसेस. 5 करोड़ टू 250 करोड़ कितने हैं? मेक योर गेसेस. कम ऑन फास्ट. 50,000. More answers. 1 lakh, 50,000, 1,000. More answers. Come on. Come on fast. 75,000. 15,000. No, 1,50,000. Okay, thank you. Awesome. Well, the answer 10 lakh. 3 lakh plus. There are more than 3 lakhs SMEs in India. SMEs means with businesses or companies with turnover between 5 crore and 250 crore. 5 करोड़ से 250 करोड़ वाली 3 लाख कंपनियां. इनमें से कितने लिस्टेड है? हाउ मेनी ऑफ दीज 3 lakhs आर लिस्टेड? हाउ मेनी? हाउ मेनी ऑफ दीज 3 lakhs आर लिस्टेड? 1,500. Around 1,000 listed. 6,000. More answers. I'm talking all this just to make it a bit interactive and interesting. Okay. 10,000, 2,000, 6,000. More answers. 1,800, 1,000, 16,000, 3,000. Okay. Awesome. Awesome. 880 companies approximately. शायद 10-5 और ऐड हो गई होंगी. 880, 890 companies are listed out of these 3 lakhs. इन 3 लाख में से इतनी कम क्यों भाई? कोई तो रीजन होगा ना. 880 companies listed. These companies raised 14,000 crores from the market. इनका सबका मिलाकर के जो फंड रेजिंग था आईपीओ से, दैट वाज 14,000 करोड़. 14,000 करोड़ रुपए इन्होंने मार्केट से रेज किया, जिसका वैल्यूएशन अभी है 2 लाख करोड़. 2 लाख करोड़ उसका वैल्यूएशन हो गया. और मजे की बात क्या है कि आउट ऑफ दीज 880 कंपनीज, 325 कंपनीज प्लस हैव माइग्रेटेड टू द मेन बोर्ड. You can also get migrated to the main board after 3 years of SME IPO listing. Okay, subject to certain conditions. तो what is the reason इतनी कम क्यों listed है भाई? कुछ तो रीजन होगा ना. रीजंस हैं लैक ऑफ अवेयरनेस. लोगों को मालूम नहीं है कि ऐसा कुछ है. नॉलेज नहीं है क्या है, क्यों है, कैसे है, अगर करना है तो कैसे होगा. फिर जिनको थोड़ा बहुत पता भी है, दे आर अफ्रेड ऑफ द आईपीओ प्रोसेस, एंड यू शुड बी, बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. इजी नहीं है, बट you don't have to worry. There are people like us who can help you in this process and make it easy for you. Then indecisiveness. आप लोग फैसला नहीं कर पाते हैं करें कि नहीं करें. जैसे वो होता है ना कि she loves me not, she loves me not. वैसे ही हम करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें, blah blah blah. So you are not able to take a decision. Why? Because आपको knowledge नहीं है. Then fear of compliances is the another reason. लोग डरते हैं कि compliances बढ़ेंगी. Definitely थोड़ी बहुत बढ़ेंगी ना. But आपने जब बिजनेस शुरू किया तो आपके पास बहुत छोटी compliances, बहुत थोड़ी सी compliances भी नहीं थी. आपने छोटा सा बिजनेस शुरू किया, कोई compliance नहीं है. फिर आपने थोड़ी इनकम आपकी बढ़ी तो इनकम टैक्स की आपके compliance शुरू हो गई. फिर आपने सेल बढ़ी आपकी तो आपको सेल्स टैक्स की उस टाइम में जरूरत पड़ी. फिर उसको जिसको बोलते हैं वैट की जरूरत पड़ी. अभी जीएसटी हो गया.
उसके बाद आपने अगर प्राइवेट लिमिटेड बनाई तो आपको एमसीए की यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की फॉर्मेलिटीज कंप्लायंसेस शुरू हो गई। तो जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं योर कंप्लायंसेस आर गोइंग टू इंक्रीज। सो कंप्लायंसेस से डर के क्या ग्रो होना छोड़ देंगे क्या? नहीं, नॉट एट ऑल। सो व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ कंप्लायंसेस? यू शुड नॉट बी। डरने की जरूरत नहीं है। बिजनेस बढ़ेगा, कंप्लायंसेस थोड़ी बहुत बढ़ेगी तो क्या हुआ? यू कैन अफोर्ड दैट। बट यू वांट टू गेट लिस्टेड बट यू आर वरीड। सबसे बड़ा टेंशन आता है यार, क्या टेंशन आता है दिमाग में? जो कॉमन फियर्स हैं लिस्टिंग कराने के लिए, लिस्टेड कंपनी बनने के लिए बहुत सारे फियर्स हैं। कॉमन फियर्स मेजर क्या है? सबसे पहले प्रमोटर्स आर अफ्रेड कि मेरा कंपनी, मेरा बिजनेस कोई टेक ओवर कर लेगा। दे आर अफ्रेड कि मेरा बिजनेस कोई इन्वेस्टर्स टेक ओवर कर लेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। नॉर्मली एसएमई आईपीओ में 1 लाख के आसपास की एप्लीकेशंस होती हैं, तो 1 लाख रुपया लगा के आपकी कंपनी कोई टेक ओवर नहीं कर सकता। ओके, देन जो इन्वेस्टर्स आते हैं वो इस इंटेंशन से नहीं आते कि उन्होंने आपकी कंपनी या आपका बिजनेस टेक ओवर करना है। दे कम, दे इन्वेस्ट इन योर कंपनी और इन द आईपीओ टू मेक सम प्रॉफिट्स। अपना 10, 20, 30, 50% प्रॉफिट वो बना के निकल जाते हैं। उनको आपकी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। ओके, देन मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर से हमारे तो एसेट्स की वैल्यूएशन ज्यादा है, तो आईपीओ में तो वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है पूरा। तो आईपीओ में वैल्यूएशंस जो है एसएमई आईपीओ में, वो एसेट्स के बेस पे नहीं मिलता है। तो आपके जो भी एसेट्स हैं वो आपके हैं, आपकी कंपनी के हैं। नोबडी इज गोइंग टू टेक ओवर दी assets from you. They are going to remain with your company. SME IPO में valuation is always based on profits. Okay. Then लोग डरते हैं कि आई हैव टू डिस्क्लोज माई सीक्रेट्स, बिजनेस सीक्रेट्स मेरे आउट हो जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई बिजनेस सीक्रेट्स आपके आउट नहीं होते। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी हैं तो आपको एमसीए की साइट पे अपनी प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हर साल अपलोड करनी होती। और दुनिया में कहीं भी कोई आदमी, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एनीबडी can look into your profit loss account, into your balance sheet. They can even take copies of them by paying a small fees to the MCA. Okay. Then people are afraid of compliances. Compliances बढ़ जाएंगी, no doubt बढ़ेगी, थोड़ी सी बढ़ती हैं, कोई बहुत ज्यादा compliances नहीं बढ़ती हैं एसएमई आईपीओ में। हाँ, मेन बोर्ड आईपीओ में compliances बहुत सारी बढ़ जाती है, बट एसएमई आईपीओ में उतनी नहीं है। ओके, देन बहुत से लोग डरते हैं कि अगर मैं आईपीओ करूंगा तो आई विल कम अंडर द रडार ऑफ अथॉरिटीज। सो माय डियर फ्रेंड, अथॉरिटीज रडार उस पर लगाती हैं जो कोई गलत काम करता है। अगर आप आपने अपना बिजनेस ठीक ठाक ऑनेस्टली करना है तो कोई रडार आपके ऊपर नहीं आएगा। ओके, सो ये सारे जो फियर्स हैं, दीज आर बेसलेस फियर्स, निकाल दीजिए दिमाग से। फिर आप लोग सोचते हैं कि हु इज गोइंग टू हैंड होल्ड यू? आपकी हैंड होल्डिंग कौन करेगा? बिकॉज दिस इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ओके, so we at IPOCARE, we do the complete hand holding from start to finish. We'll be there to help you out. Okay, now most of you don't know who I am, so let me tell you briefly about me. My name is M Aggarwal. I'm a chartered accountant by profession with 45 plus years of experience. I'm also an author. I've been doing project consultancy, loan syndication, bank financing, institutional financing. All that was my area of work. I also published a weekly newspaper for around 8 years in the 90s, 91 to 98. Okay. The name of the newspaper, weekly paper, was Money Media. And during that time, I met almost all the entrepreneurs or say industrialists of India, except Ratan Tata and Dhirubhai Ambani. Okay. I have advised dozens and dozens of IPOs and SME IPOs in India. I was the sole advisor of Cantabile Retail India Limited. मैंने ही उनका 105 करोड़ का IPO बेचा था सिंगल हैंडेडली। ओके, Cantabile Retail India Limited आप सब जानते होंगे। There must be showrooms, Cantabile showrooms in your city. I'm also the author of this book, Indian SMEs and the Power of SME IPO. This book is available on Amazon. If you want to buy, you can just go there. Or even if you Google SME IPO book, you will find this book immediately on the first page itself. Okay. So you can buy it from Amazon if you want to buy. These are my other books.
These are also available on Amazon, right? Now I am on a mission to help at least 1,000 SMEs, 1,000 SMEs to achieve growth in their business through SME IPO. So who is going to be with me in this journey? मेरे साथ कौन कौन इस जर्नी में चलना चाहता है? 1,000 SMEs की हेल्प मुझे करना है. So write down in the chat box who are going to be with me in this journey. Come on, fast. Good, 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 good. Very good. Awesome, awesome, awesome. Thank you, thank you. These are the glimpses or some pictures of our seminars which used to be in auditoriums before the COVID period, like this. This is just to give you an idea what kind of programs we have been having. But now, after COVID, everything is online. There are no physical seminars, only webinars are there. Okay. Now, a big question, why SME IPO? हमें क्यों करना चाहिए SME IPO? जरूरत क्या है करने की? कोई तो रीजन होगा ना कि हम SME IPO करें. कुछ फायदे होंगे, कुछ बेनिफिट्स होंगे, तभी तो करेंगे. तो क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फायदे हैं? लेट्स लुक इनटू दैट. So first of all, you get easy access to funds. Through SME IPO, you can raise funds easily. And when you get sufficient funds for your business, you grow your business faster. तो faster growth मिलता है, फंड इजीली मिल जाते हैं, जिससे ग्रोथ आपका फास्टर हो जाता है. आप वैसे भी ग्रो करेंगे बट धीरे धीरे करेंगे, बट फंड पूरे आने से आपकी ग्रोथ फास्ट हो जाएगी. ओके. देन with an IPO, there is an instant increase in the companies and promoters net worth. आपका और आपकी कंपनी का नेटवर्थ जो है इमीडिएटली बढ़ जाता है, ड्रामेटिकली, इंस्टेंटली. ओके. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि 10 करोड़ की कंपनी नेटवर्थ की, उसका IPO में वैल्यूएशन कैन बी 100 करोड़, 80 करोड़, 70 करोड़, 110 करोड़, लाइक दैट. ओके. सो लिस्टेड कंपनीज नॉर्मली गेट बेटर क्रेडिट लिमिट्स. ज्यादा लोन मिल सकता है, ज्यादा क्रेडिट लिमिट मिल सकती हैं, एंड यू कैन बार्गेन विद योर बैंक ऑन इंटरेस्ट रेट्स ऑल्सो. थोड़ा इंटरेस्ट रेट में भी डिस्काउंट दे देते हैं लिस्टेड कंपनीज को बैंक वाले. ओके. तो लिस्टेड कंपनीज और से ड्यूरिंग द IPO इटसेल्फ आपको फ्री पब्लिसिटी मिलती है, फ्री विजिबिलिटी मिलती है, आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. पहले आपकी कंपनी के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, आप ही के फील्ड में जानते थे, बट व्हेन यू गो फॉर द IPO, बहुत सारे नए लोग आपके कंपनी के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आपके बारे में जान जाते हैं. आपको फ्री पब्लिसिटी मिलती है, जिसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पे भी उतना नहीं मिलता, और आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है. बहुत सी कंपनीज का ये एक्सपीरियंस किया गया है कि जो पब्लिसिटी फ्री की मिलती है ड्यूरिंग द IPO प्रोसेस एंड आफ्टर दैट, तो उससे उनको नया बिजनेस ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो जाता है. दे स्टार्ट गेटिंग न्यू ऑर्डर्स, दे स्टार्ट गेटिंग न्यू इंक्वायरीज, एटसेट्रा एटसेट्रा. इवन आफ्टर लिस्टिंग, जैसे जो स्टॉक एक्सचेंज की स्क्रीन पर बड़ी कंपनीज के नाम आते हैं, उन्हीं के साथ आपकी कंपनी का भी नाम आता है. उसके लिए कोई अलग स्क्रीन नहीं है, सेम स्क्रीन पे नाम आते हैं, आपकी कंपनी का भी आएगा. ओके. फिर आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है. जब आपको फ्री पब्लिसिटी मिल रही है, आपकी कंपनी के बारे में लोग जान रहे हैं, तो आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है. ओके. यू कैन ऑल्सो बिकम ए डेट फ्री कंपनी. आप कुछ लोन रिपेमेंट कर सकते हैं ग्रेजुअली. जब आपका प्रॉफिट बढ़ता है तो आप पूरा लोन भी रिपेमेंट कर सकते हैं. यू कैन अनलॉक वैल्यूएशन. मैंने अभी जैसे दिखाया कि कैसे वैल्यूएशन अनलॉक होती है, तो यू कैन ऑल्सो अनलॉक वैल्यूएशन. मजे की बात क्या है, द फंड विच यू रेज फ्रॉम द IPO आर जीरो इंटरेस्ट फंड्स. इस पैसे पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता, टोटली इंटरेस्ट फ्री पैसा है ये. ओके. और ये पैसा वापस भी नहीं करना पड़ता. दिस इज नॉट रिफंडेबल. नो शेयर होल्डर और नो एप्लीकेंट कैन कम टू यू एंड आस्क फॉर अ रिफंड. कोई आके आपसे पैसा वापस नहीं मांग सकता कि जी मैंने आपके IPO में अप्लाई किया, मुझे नहीं चाहिए, मेरा पैसा वापस कर दो. नो 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 भैया, आपको शेयर अगर अलॉट हो गए हैं, यू कैन सेल द शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट. हमारे से आप रिफंड नहीं मांग सकते. ओके. टिल द टाइम यू आर रनिंग द बिजनेस, नोबडी कैन आस्क यू फॉर अ रिफंड. ओके. देन वेल्थ क्रिएशन होता है, नॉट ओनली फॉर द इन्वेस्टर्स. Wealth creation is there for the company as well as for the promoters. I've already shown you how wealth is created. Okay. Then your shares become currency.
आपके शेयर्स जो हैं वो करेंसी नोट की तरह हो जाते हैं. सपोज आफ्टर द आईपीओ, वन फॉर 1 year यू कैन नॉट सेल और प्लेज योर शेयर्स, बट आफ्टर 1 year's लॉक इन, you can sell a small part or entire holding of your shares in the market. Okay, and that is just like carrying cash in your pocket. आज आपको थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है लिस्टिंग के 1 साल बाद, तो आप अपना 1%, 2%, ½ %, 2.5%, 4% शेयर्स मार्केट में बेच सकते हैं. अगले दिन पैसा आपके बैंक में आ जाता है. ओके, सो दिस इज जस्ट लाइक हैविंग करेंसी नोट्स इन योर पॉकेट. ओके, देन योर शेयर्स बिकम कोलेटरल सिक्योरिटी. अपने शेयर्स के अगेंस्ट ही आप लोन ले सकते हैं, क्योंकि आपके शेयर लिस्टेड कंपनी होने के बाद दे बिकम कोलेटरल सिक्योरिटी. ओके, लिस्टेड कंपनीज नॉर्मली अट्रैक्ट बेटर टैलेंट्स. अच्छा स्टाफ मिलता है लिस्टेड कंपनीज को, बिकॉज पीपल प्रेफर वर्किंग इन लिस्टेड कंपनीज एज कंपेयर टू नॉन लिस्टेड कंपनीज. तो आपकी टीम बेटर होती है, तो आपका बिजनेस बेटर होता है, आपकी ग्रोथ फास्ट होती है. देन यू कैन प्लान एक्विजिशंस, मर्जर्स, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा. क्योंकि जब पैसा चाहिए इन सब के लिए और पैसा आईपीओ से आता है, तो यू कैन प्लान acquisitions, mergers, forward or backward integrations, etc. Then if somebody wants to exit, there are partners or there are shareholders in your company who want to exit. So after listing, अगर M&A करना है, मर्जर एंड एक्विजिशन करना है या एग्जिट करना है, तो रियल टाइम वैल्यूएशन स्टॉक मार्केट की स्क्रीन पे आपके शेयर की प्राइस आती होती है, उसके हिसाब से आप रियल टाइम वैल्यूएशन के हिसाब से एग्जिट मिल सकता है या मर्जर एक्विजिशन डिसाइड हो सकता है. एंड देन व्हेन यू आर द ओनर ऑफ ए लिस्टेड कंपनी, तो आप कहीं भी जाते हैं, यू गेट बेटर अटेंशन, आपकी इज्जत ज्यादा होती है समाज में, लोग आपके रिस्पेक्ट करते हैं. सो दीज आर द बेनिफिट्स. यू कैन बिकम ए लॉयन फ्रॉम ए कैट. अभी आप अपने फील्ड में, अपने सेक्टर में एक छोटे प्लेयर हैं, जब आपके फंड्स आ जाते हैं, आपका नाम हो जाता है, तो यू बिकम ए बिगर प्लेयर एंड यू कैन बी द किंग ऑफ योर सेक्टर. नाउ व्हाट स्ट्रेटजीज आर रिक्वायर्ड. क्या क्या स्ट्रेटजीज ध्यान में रखनी चाहिए. ओके, फर्स्ट स्ट्रेटजी, if you want to go for the IPO, you should have strong financials. Strong financials means there is a tendency in the SME segment कि टैक्सेशन के एंगल से या किसी और एंगल से पूरा बिजनेस बुक्स में नहीं दिखाते हैं, पूरा प्रॉफिट नहीं दिखाते हैं बुक्स में. दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस. आप सोचते हैं आपने फायदा कर लिया, बट इन द लॉन्ग रन आप फायदा नहीं कर रहे हैं, अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं. क्योंकि अगर आप पूरा बिजनेस आपका बुक्स में नहीं है या पूरा प्रॉफिट्स नहीं है बुक्स में, तो आपके फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं हो सकते. सो योर बिजनेस फाइनेंशियल्स शुड बी स्ट्रांग. दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. देन यू शुड गो फॉर प्रोफेशनल एडवाइजर्स. व्हेन आई से प्रोफेशनल एडवाइजर्स मीन्स those advisors who have experience and they are professional in this particular area. Okay, there are other professionals also, but they may not be having experience in IPO arena or stock market arena. Okay, then you should have a business plan. ये नहीं है कि हाँ मेरे को किसी ने बोला आईपीओ करना है तो मैं कर रहा हूँ. भैया क्यों कर रहे हो? मेरे को लोगों ने बोला करो आईपीओ करो, या मेरी इच्छा है आईपीओ करना है. तो आईपीओ क्यों करना है? करोगे क्या? उसका पैसे का क्या करोगे? यू शुड हैव बिजनेस प्लान के हाँ क्या करना है. ओके, देन कंप्लायंसेस. व्हेन आई से कंप्लायंसेस हियर, यहाँ कंप्लायंसेस का मतलब है कि आपकी टैक्सेशन की, लेबर लॉज की सारी कंप्लायंसेस पूरी होनी चाहिए. इनकम टैक्स वगैरह, जीएसटी वगैरह, आपके लेबर लॉज की कोई ड्यूज हैं वो सारी क्लियर होनी चाहिए. अगर कोई पेंडेंसी है तो आप क्लियर कर लीजिए बिफोर गोइंग टू दी फॉर द आईपीओ. ओके, नाउ देन यू शुड हैव ए पोस्ट आईपीओ स्ट्रेटेजी कि आप अपने बिजनेस को, अपनी कंपनी को कैसे ग्रो करेंगे और कैसे इसको अपनी टॉप लीग में लेके जाएंगे. बिकॉज जो इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसा लगाता है वो चाहता है कि जिस कंपनी में उसने इन्वेस्ट किया वो कंपनी ग्रो करे. जब कंपनी ग्रो करेगी तभी उसको फायदा होगा. ओके, नाउ ये बातें हुई स्ट्रेटेजी की. नाउ एलिजिबिलिटी. कौन कौन से लोग या कौन कौन से बिजनेसेस या कौन सी या किस साइज की कंपनीज एलिजिबल हैं एसएमई आईपीओ करने के लिए? कौन कौन जानना चाहता है? जो जानना चाहते हैं लिखिए फटाफट आए.
Those who want to know the eligibility criteria say I. Come on, fast. Good, good, awesome, awesome, awesome. So the first requirement is that you should, or your business should have at least 3 years of track record. आपका बिजनेस कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए. अगर इससे कम है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 3 साल पूरे करने पड़ेंगे. जहां कन्वर्जन होता है प्राइवेट लिमिटेड में फ्रॉम प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, तो वहां पर पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड आपका है एज ए प्रोप्राइटर और एज ए पार्टनरशिप फर्म, वो काउंट होता है. ओके, सो वो मिला करके इट शुड बी more than 3 years. Okay. First condition. What is the second condition? You should be profitable for at least 2 out of the last 3 years. पिछले 3 साल में से कम 2 साल में प्रॉफिट होना चाहिए. ओके, ये सेकंड कंडीशन. कोई बोले जी मैं तो पीछे तो 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में लॉसेस करता रहा हूं, अभी मैं प्रॉफिट कमाऊंगा तो मेरा आईपीओ हो जाए. नहीं होगा. थर्ड कंडीशन, नेट टेंजिबल एसेट्स ऑफ मोर देन 1.5 करोड़. नेट टेंजिबल एसेट्स मींस आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड पर जितनी आइटम्स हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन हैंड, वर्क इन प्रोसेस, रिसीवेबल्स, सन्ड्री डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, एडवांसेस, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे आपके टेंजिबल एसेट्स हैं. इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? इनटेंजिबल है जैसे गुडविल है आपका, कोई कॉपीराइट है, कोई ट्रेडमार्क है, अगर उसकी कोई वैल्यूएशन आपने एसेट में इंक्लूड की हुई है वो काउंट नहीं होगी. ओके, सो नेट टेंजिबल एसेट्स ऑफ मोर देन 1.5 करोड़. Even known companies are eligible. Even if you are a proprietorship or a partnership or a private limited company or an LLP or a one-person company, you can convert into a limited company for SME IPO purpose and come out with SME IPO. Okay. No change in promoters during last 1 year. पिछले 1 साल में promoters में कोई major change नहीं होना चाहिए. Suppose there is a partnership firm जिसमें एक partner निकल गया या एक पार्टनर ऐड हो गया, तो उस डेट से 1 साल वेट करना होगा कम से कम. okay? अभी जो कन्वर्जन है फ्रॉम प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप इनटू लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड देन लिमिटेड, तो उस केस में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अभी 1 जनवरी से रूल्स चेंज किए हैं. दोज कंपनीज विल हैव टू कंप्लीट 1 फुल फाइनेंशियल ईयर्स बिफोर गोइंग फॉर द आईपीओ. एनएससी में अभी ये रूल नहीं आया है. सो दोज हु वांट टू गो, want to convert their business and go for the IPO, NSE is the option for them. Okay. Now, कौन से बिजनेसेस अगर हम पूछें तो इफ यू लुक एट दिस लिस्ट, कोई भी बिजनेस, एनी बिजनेस, टेक्सटाइल, स्टील, फूड प्रोसेसिंग, कंसल्टिंग, मीडिया, एंटरटेनमेंट, केमिकल्स, आयरन स्टील, agricultural implements, education, edible oils, chemicals, gems and jewelry, etc., etc., logistics, IT based, any business, हर business जो कि legally allowed है इंडिया में, they can come out with an SME IPO. कोई रोकता नहीं है. जो बिजनेस लीगली अलाउड है वो सारे बिजनेस SME IPO कर सकते हैं. ओके, नाउ आर यू एलिजिबल? मैंने सारी कंडीशंस आपको बता दी हैं. इफ यू मीट दीज कंडीशंस यू आर एलिजिबल. ओके, बट इसके साथ देयर इज अनदर एलिमेंट जिसका ध्यान रखना जरूरी है कि आपकी कंपनी कैपेबल है या नहीं है. आप एलिजिबल तो हैं बट आपकी कंपनी कैपेबल है या नहीं है. व्हेन आई से कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी मींस आपकी कंपनी क्या इन्वेस्टर्स को फायदा देगी. इन्वेस्टर पैसा लगाता है किसी भी बिजनेस में, किसी भी कंपनी में, तो वो चाहता है कि उसको बेनिफिट हो. तो क्या आपकी कंपनी इन्वेस्टर का फायदा करवाएगी? अगर हाँ, तो डेफिनेटली आप आ सकते हैं आईपीओ के लिए. When I say capability, let me make it more clear by an example.
अगर आप इंडिया में किसी भी आईआईटी पे जाते हैं, आईआईटी का प्रोस्पेक्टस उठाते हैं, तो एवरी आईआईटी इन इंडिया इन देयर प्रोस्पेक्टस दे से those students who have secured 60% or more in their 12th grade are eligible for admission. 60% मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स आईआईटी के लिए एलिजिबल हैं, बट 60% वाले को किसी को एडमिशन मिलता है क्या? नहीं मिलता। एडमिशन किसको मिलता है? 95% प्लस वालों को मिलता है, 96, 97, 98, 99। वाई? बिकॉज कॉम्पिटिशन इज देयर। यहाँ कंपटीशन क्या है कि अच्छी कंपनी होगी तभी तो उसे इन्वेस्टर पैसा लगाएंगे। अगर कंपनी अच्छी नहीं है तो इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाएगा। सो आपकी कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो इन्वेस्टर का बेनिफिट करे। नाउ प्रोसेस कौन कौन जानना चाहता है कि एसएमई आईपीओ का प्रोसेस क्या है? कौन कौन जानना चाहता है? जो जानना चाहता है से मी। प्रोफेशनल्स कैन डू, प्रोफेशनल्स कैन गो फॉर एसएमई आईपीओ। ओके, ऑसम ऑसम ऑसम, थैंक यू, थैंक यू। This chart gives you a brief idea of the process in brief. Okay. First of all, you have to appoint IPO advisors. And for your information, we at IPOCARE are one of the leading IPO advisors in the country. We can help you in the entire process. Okay. Then we help you in appointing the merchant bankers or lead managers or investment bankers. एक ही चीज होती है, नाम तीन है अलग अलग। देन आफ्टर दैट आपके बिजनेस का, आपकी कंपनी का फाइनेंशियल और लीगल ड्यू डिलिजेंस होता है, लॉ फर्म अपॉइंट होती है, आपका बिजनेस प्लान रिव्यू किया जाता है, आपकी कैपिटल की रिस्ट्रक्चरिंग की जाती है, प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट किया जाता है, फिर लिमिटेड में कन्वर्ट किया जाता है, एंड देन यू हैव टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। उनको कोई शेयर नहीं दिया जाता। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स उतने ही होने चाहिए जितने आपके प्रमोटर डायरेक्टर्स हैं। सपोज आपके 3 डायरेक्टर हैं तो 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको लेने पड़ेंगे। उनको कोई शेयर नहीं देना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को, बट उनको सिटिंग फीस दी जाती है। जो भी बोर्ड मीटिंग वो अटेंड करेंगे उनको एक फीस दी जाती है, 10, 20, 50 हज़ार, जो भी आप देना चाहते हैं पर मीटिंग। देन दूसरे इंटरमीडिएट्स हैं बहुत सारे जिनकी जरूरत पड़ती है आईपीओ प्रोसेस में, वो उनकी सबकी अपॉइंटमेंट होती है। जैसे आपका आरटीए है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, आपकी लॉ फर्म है, आपका पीयर रिव्यू ऑडिटर है, आपका एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, आपका अंडरराइटर है, आपका मार्केट मेकर है, आपके ब्रोकिंग फर्म्स हैं, सबकी अपॉइंटमेंट होती है। देन योर प्रोस्पेक्टस और द ऑफर डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड। फिर ये ऑफर डॉक्यूमेंट, जिसको प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, डीआरएचपी बोलते हैं, दिस इज फाइल्ड विद द स्टॉक एक्सचेंज। मेन बोर्ड में एसएमई में स्टॉक एक्सचेंज में फाइल होता है, मेन बोर्ड में सेबी में फाइल होता है। तो यहाँ स्टॉक एक्सचेंज आपका ऑफर डॉक्यूमेंट या प्रोस्पेक्टस रिव्यू करता है, और जो भी उनके क्वेश्चंस है यू हैव टू सेटिस्फाई देम, और उसके बाद उनका अप्रूवल मिल जाता है। वंस यू गेट द अप्रूवल, देन यू हैव टू ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑल्सो। आफ्टर दैट यू हैव टू कंप्लीट सर्टेन कंप्लायंसेस, जो प्री इशू कंप्लायंसेस होती हैं वो आपको पूरी करनी होती हैं। उसके बाद आपका आईपीओ खुलता है, एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जो भी आप फिक्स करते हैं, नॉर्मली द आईपीओज रिमेन्स ओपन फ्रॉम 3 to 6 days। तो उस टाइम, फिक्स टाइम पे आईपीओ क्लोज होता है। उसके बाद विद इन 3 days आपको लिस्टिंग करानी होती है अलॉटमेंट करके। जो भी जितने भी शेयर्स अलॉट होने हैं वो अलॉट होते हैं, बाकी को रिफंड जाना है। वो सारा प्रोसेस कंप्लीट करके 3 दिन में आपको लिस्टिंग करानी होती है। ये सारा काम आपका आरटीए करता है, आपके लीड मैनेजर्स और हम लोग मिलकर करते हैं। जब आपकी लिस्टिंग हो जाती है, आपके शेयर्स में ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। एज सिंपल एज दैट। इवन आफ्टर दैट we are there to help you in the second round of funding, in the third round of funding, and the next and the next and the next if you want. Okay, so this is the process in brief. Now, are you excited with this information? Are you excited? Who is excited? Good, good, good. If you're excited, I want a favor from you, a small favor. This is a public website, Trustpilot, where people give their reviews and ratings. Okay,
So all of you will get this link, Trustpilot link for my website, my services in your email. एंड आपको क्या करना है कि अपना ऑनेस्ट रेटिंग देना है, जो भी आप 5 स्टार 4 स्टार वट एवर यू फील कि हाँ, तो आप रेटिंग दीजिए और 2 3 4 लाइंस में या एक आध पैराग्राफ में अपना फीडबैक, अपना रिव्यू उसमें डालिए. दिस इज व्हाट आई आस्क ऑल ऑफ यू टू डू. ओके, आपको सबको ये लिंक ईमेल में मिल जाएगा. नाउ केस स्टडीज जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि जो कंपनीज आईपीओ किया उनमें जो अच्छी कंपनीज हैं उनका क्या हुआ, तो आप जानना चाहेंगे. डेफिनेटली ऑल ऑफ यू विल बी इंटरेस्टेड टू नो दैट. So these are the companies, top 10 companies which came out with IPO in 2022. 2022 में इनके IPO आए. 38 रुपए का शेयर अक्टूबर 2022 में. अभी वैल्यूएशन है अप्रोक्सीमेटली 700 रुपए, 1700% ग्रोथ. दिसंबर 22 30 रुपए का शेयर, अभी 423, 1300%. अक्टूबर 22 55 रुपए का शेयर, 744 रुपए, 1250% ग्रोथ. March 22 38 रुपी शेयर, 497, 1200% ग्रोथ. एंड लाइक दैट, एंड लाइक दैट. ओके, ये कंपनीज हैं which came out top 10 companies in 23. इनका क्या रहा, एक साल से भी कम है इनका टाइम. ये जनवरी में आई, 36 रुपीज का शेयर, अभी 370 का है, 900% ग्रोथ. 64 का शेयर 374 का है, अप्रैल 17 को आई थी ये 2023 में, 485% ग्रोथ. 128 वाला 720, 75 वाला 418, एंड लाइक दैट. So this is the kind of growth which is there. These are the case studies, and there are lots and lots more case studies available. If I start showing everything, that will take hours and hours and hours together. Okay. Now, this is how value creation is done. This is how wealth creation is done. Okay. Mr. Dhirubhai Ambani, the CEO, earlier CEO and promoter of Reliance Group. Okay. Most of you don't know or may not be knowing that Reliance came out with their IPO in 1977. The IPO size was just 4 crores. 4 करोड़ का IPO लेके रिलायंस ने मार्केट में एंट्री की थी 77 में. आज रिलायंस ग्रुप की वैल्यूएशन कितनी है? लैक्स एंड लैक्स ऑफ करोड्स. 4 करोड़ से स्टार्टिंग होकर के आज लाखों करोड़ में अगर एक ग्रुप पहुंच सकता है तो आप भी पहुंच सकते हैं. आपको भी कोई रोकने वाला नहीं है. ओके. किस किसके दिमाग की बत्ती जली? हु इज माइंड ब्लोन? किसकी बत्ती जली? फटाफट लिखिए मी. जिसके दिमाग की बत्ती जली है फटाफट से लिखिए मी. है ना चौंकाने वाली चीज? So this can be your situation also. You can be one of them. You can be one of them if you take the right decision at the right time. आप इनमें से बहुत से लोगों को जानते होंगे या पहचानते होंगे बाय फेस. दीज आर ऑल टॉप बिजनेस टाइकून्स इन द कंट्री. ये सब भी आपकी ही तरह एसएमईज थे कोई जमाने में, कोई टाइम पे. ऑल ऑफ देम वर एसएमईज एंड नाउ दे आर बिग 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 business tycoons. You can be the next, you can be one of them if you take the right decision at the right time. Okay. But what is holding you back? आपको क्या चीज रोक रही है? आपको सबकॉन्शियस माइंड में जो डाउट्स हैं, जो मैं पहले बता चुका हूं, ये सारे डाउट्स आपको रोक रहे हैं. मेरा बिजनेस को टेक ओवर कर लेगा, मेरे एसेट्स ज्यादा वैल्यूएबल हैं, मेरे बिजनेस सीक्रेट डिस्क्लोज हो जाएंगे, मेरे शेयर होल्डर्स बिजनेस में इंटरफेरेंस करेंगे, कंप्लायंसेस बढ़ जाएंगी, मैं अथॉरिटीज के रडार पे आ जाऊंगा, एंड लाइक दैट. These are all baseless fears. I've already explained it to you. तो इन सब चीजों से डरने की जरूरत नहीं है. If you want to take a decision, take a decision. Go for it. So what next? अभी आपने सब कुछ जान लिया है, तो अब आगे क्या है? If you have an IPO dream, अगर आपका सपना है कि IPO करना है, तो we provide complete IPO solution under one roof. आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी. We'll compile the entire team और सारा काम हम स्टार्ट टू फिनिश हैंड होल्डिंग करते हैं.
आपका कंप्लीट आईपीओ करवा के देते हैं, start to finish we do the hand holding. Okay, so if you want to become a listed company, the right time is now. मैं क्यों कह रहा हूं right time is now? Let us look at the next slide. Okay, शुरू में the SME segment started in 2012. शुरू के 4 साल में अप्रोक्सीमेटली 25 कंपनीज आती थी, मतलब 4 साल में 100 कंपनियां लिस्ट हुई। अगले 2 साल में फिर अप्रोक्सीमेटली 100 कंपनियां हुई, अगले 2 साल में फिर अप्रोक्सीमेटली 100 कंपनियां हुई, अगले साल में फिर 100 कंपनियां हुई। बट 22 में एक ही साल में 107 कंपनीज लिस्ट हुई एसएमई में। ओके, एंड 23 में 179 कंपनीज लिस्ट हो चुकी हैं। अभी 24 चल रहा है। 24 का एस्टिमेट है कि देयर विल बी अप्रोक्सीमेटली 300 एसएमई आईपीओज इन द करंट कैलेंडर ईयर। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि नाउ इज द राइट टाइम, आइदर यू लिस्ट नाउ और रिग्रेट फॉर एवर। व्हाई? बिकॉज विद मोर एंड मोर कंपनीज कमिंग विद एसएमई आईपीओज, कंपटीशन बढ़ जाएगा मार्केट में। आप बोलोगे यार इसमें कंपटीशन कहां से बढ़ जाएगा? माय डियर फ्रेंड्स, कंपटीशन विल इंक्रीज बिकॉज मार्केट में इन्वेस्टर्स वही हैं, उतने नहीं बढ़ रहे हैं जितने आईपीओज बढ़ रहे हैं। फंड्स भी वही हैं जो इन्वेस्ट होते हैं, वो फंड्स भी उतने नहीं बढ़ रहे हैं जितने आईपीओज बढ़ रहे हैं। तो जब ज्यादा कंपनीज आती हैं आईपीओज लेकर के तो वैल्यूएशन घटती हैं, कम हो जाती हैं, स्क्वीज हो जाती हैं। तो जितना जल्दी आप करेंगे उतना आपका बेनिफिट है। सो राइट टाइम इज नाउ एंड देन दे से सक्सेस लव्स स्पीड। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको स्पीड से काम करना होता है। धीरे धीरे चलने वाला वो खरगोश की कहानी, कछुए की कहानी, वो कहानियों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता। ओके, so if you want to launch a successful SME IPO, you are in the right place. Or if you are a professional, I see there are lots of professionals attending this webinar. So if you are a professional and want to offer this service to your clients, and if you start offering this service just by attending the webinar or by reading some books, my dear friends, be careful, because this is a very tricky profession, very complicated profession, and you may lose the client itself. Okay, so if you want to go into this profession, or if you want offer this service to your clients, or if you are a SME and want to get listed, I offer a 30 minutes one-to-one Zoom call. कौन मेरे से 30 minutes one-to-one Zoom call करना चाहता है? Come on, fast. Come on. Who wants to discuss his or her IPO prospects with me one-to-one? Good, awesome. तो अभी अगर मैं यहाँ लिंक डाल दूं तो देर आर अराउंड 256 पीपल इन द रूम, और उनमें कम से कम भी 200 लोग क्लिक कर देंगे। एंड इफ 200 लोग बुक करेंगे तो उतना तो मैं टाइम कोई भी नहीं दे पाता, तो मैं भी कहां से दे पाऊंगा। तो जस्ट टू मेक इट ए बिट सिलेक्टिव, हमने एक छोटी सी एंट्री फीस रखी हुई है one-to-one डिस्कशन के लिए, जस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट, so that only serious people come. Okay, and if you are interested to have a 30 minutes one-to-one Zoom call with me, here is the link. You click this link, make a small payment of 1000 plus GST, so total becomes 1180, 1180 रुपए इंक्लूडिंग GST आपको ये देने हैं। और अगर ये लिंक से आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये सामने QR कोड है, इसको स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ओके, इसको पेमेंट करके डोंट क्लोज योर ब्राउजर्स, क्योंकि जैसे आप ये पेमेंट करेंगे आपकी पेमेंट कंप्लीट होगी विद इन ए फ्यू सेकंड्स, 5-7 सेकंड में ही आपका मेरा कैलेंडर पेज आपकी स्क्रीन पे खुल जाएगा, जहां पर आप अपने चॉइस का डेट और टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। जो स्लॉट्स हैं उसमें से आप अपनी चॉइस का स्लॉट सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ ये जो लिंक है इसको क्लिक करिए, एंड इफ यू वांट अ one-to-one Zoom मीटिंग, क्लिक करके अपना बुक करिए। इवन इफ यू वांट टू बिकम अवर चैनल पार्टनर, यू आर ए प्रोफेशनल, यू वांट टू बिकम अवर चैनल पार्टनर, you please book a one-to-one so that we can discuss the modalities in detail in the one-to-one.